स्कैन इज रियली इम्पोर्टेंट, ये चेक करने के लिए कि आपके फॉलिकुलर काउंट कितने हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या पिछले साइकिल की कोई सिस्ट तो नहीं रह गई है। एंड डॉक्टर, इन केस अगर लास्ट साइकिल की सिस्ट है फॉलिकल ओवरीज में, तो व्हाट अबाउट द कमिंग साइकिल, क्या वो उसके साथ वॉश आउट हो जाएगी और वी नीड टू जस्ट से कि हम एक साइकिल और वेट करते हैं फॉर एनी फर्दर ट्रीटमेंट? If the size of the cyst is big, it is more than 3 centimeter. Usually, we don't get good results. If the patient is having time, if it isn't, she is in hurry कि मैं तो बाहर से आई हूँ. Sometimes patients come कि आर्मी वाले मेरे husband, he works in army and he has to leave for Leh or Ladakh. उनको जाना है. We have only 1 month, so have no other option. We have to try in this month only. But the results are definitely not zero. If normally we have 70% results, in this cycle we have 30% results. So results are definitely decreased, but it is there. Chances of pregnancy is always there. Is always there. So we can definitely try, but we should not do the aggressive treatment because chances of pregnancy are little less. So if the size of the cyst is more than 3, we usually don't stimulate the patient. We see, or sometimes what happens with the treatment, other stimulation drugs and other things, sometimes the size of the cyst decreases. So we can go ahead in the cycle. There is no harm on the patient's body, no harm on any other things. But this is the money of the patient, which is very important. If the patient is poor, not very affordable, then we have to see everything. If the तो हम पेशेंट को बोलते हैं नेक्स्ट में आ जाना, इस समय चांसेस थोड़े से कम है, बट स्टिल इफ शी इज विलिंग कि नहीं हम इस महीने भी ट्राई कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, थोड़ा मनी का प्रॉब्लम है, नो I don't mind. We can try. So we can try. Chances are little less, not zero, not zero. So there is no harm in giving, but chances are little less. And the follicle maturation, usually we don't get good follicles, but sometimes we can get it. Or sometimes we see in some cases size of the cyst decreases and we can go ahead also. Okay. Right. एंड डॉक्टर लतिका, एट टाइम्स वी हैव सीन सच केसेस जहां लोगों ने बोला कि बहुत सारे फॉलिकल बन गए थे, तो डॉक्टर कन्वर्टेड दैट आईयूआई साइकिल टू आईवीएफ. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कन्वर्जन ऑफ प्रोसीजर्स? Sometimes what happens when we stimulate the patient with the ovulation induction drugs, either it is oral drugs or injectable drugs, sometimes the patient is having low reserve or anything, unexplained infertility, we have stimulated the cycle. तो हम लोग IUI में सोचते हैं कि हमें ओनली 3 फॉलिकल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अदरवाइज मल्टीपल प्रेगनेंसी का चांस होगा. देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी. ट्विंस तक तो चलता है, 3 और 4 होंगे तो देन देयर विल बी डिफिकल्टी. तो IUI में हम नंबर ऑफ एग्स को हैंडल नहीं कर सकते. अगर आपके 4 या 5 फॉलिकल्स बन गए हैं और आपने ट्रिगर दे दिया, रप्चर कर दिया, हो सकता है पांचों एग्स रप्चर हो जाए. अगर पांचों का साइज नॉर्मल है, मान लीजिए हमारा जो टारगेटेड साइज है 18 to 20 millimeter. इफ शी इज हैविंग मोर देन 3 eggs, मोर देन 18 to 20 millimeter साइज, तो हमने अगर ट्रिगर दिया और चारों फर्टिलाइज हो गए तो 4 और 5 प्रेगनेंसीज बनेंगी. तो ये तो दिस इज वेरी रॉन्ग. हमें मेनली प्रेगनेंसी करने का भी रखना है. प्रेगनेंसी सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस? कैरी होम रेट. मतलब हमें बच्चे को बच्चा चाहिए, नॉट कि हमारी प्रेगनेंसी हो गई 5 बच्चे बन गए और सब खराब हो गया. दैट इज नॉट अवर टारगेट, है ना. तो अगर हमारे 4 to 5 या 5 to 6 फॉलिकल्स बन गए हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं, बड़े बड़े साइज के हो गए हैं, then we should not do IUI. If the patient is willing for IUI, that cycle should be abundant. Got it? But we can make this cycle, we can convert this cycle into IVF cycle. Because IVF में हमें eggs को pick करना है, बाहर निकालना है, eggs को बाहर निकालना है, retrieve करना है with the help of a needle, pick up needle. तो हम बाहर निकाल के इस पंप से मिला के embryos बनाएंगे. Now we can handle the number of the pregnancies. Because जहां अगर IUI करते तो 5-6 pregnancies हो सकती थी उसको. That was a risk for the patient. But यहाँ पर हमने सारे follicles को निकाल लिया, retrieve कर लिया, उनको हमने fertilize करा लिया. Then this is our job. How many pregnancies we have to, how many embryos we have to put inside the uterus. So if we doing blastocyst, we put not more than 2 embryos. So patient is not having more than 2 pregnancies. So we are saving the patient from the multiple pregnancy risk. This is the conversion of IUI cycle into IVF cycle. तो डॉक्टर लतिका, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है पेशेंट की बॉडी पे वी आर कन्वर्टिंग? नहीं, साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शी हैज ऑलरेडी टेकन द ड्रग्स फॉर ओवुलेशन इंडक्शन.
और उसको बस आईयूआई से आईवीएफ की तरफ जाना है, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, बस उसकी काउंसलिंग करनी है कि दिस साइकिल इज गुड फॉर आईवीएफ, नॉट फॉर आईयूआई, राइट, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव मल्टीपल pregnancies. In IVF, doctor can handle the number of the pregnancies. So there is no harmful effect on her body. Only thing, she has to make up her mind that this cycle is good for IVF, not for IUI. If she is not willing for IVF, then we have to abandon this cycle. Otherwise, there is no harm. But sometimes what happens, I'll tell you, there's multiple follicles are there, but she is not having the endometrium up to the mark. एंडोमेट्रियम उसकी ठीक नहीं है, उसके राइट, राइट, एग्स बड़ी मुश्किल से बनते हैं, बन गए हैं, दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि उसके शी हैज मेड ऑल द एग्स, बट एंडोमेट्रियम इज नॉट अप टू द मार्क, देयर इज नो सिंक्रोनी बिटवीन द नंबर ऑफ एग्स और साइज ऑफ द एग्स एंड एंडोमेट्रियम. सो हम आईयूआई भी करेंगे तो भी सक्सेसफुल नहीं होगा. बट नहीं इन होगा, आईवीएफ व्हाट वी डू, वी रिट्रीव द एग्स एंड वी फ्रीज द एग्स. हम उसको फ्रीज कर लेंगे और नेक्स्ट नेचुरल साइकिल में डाल देंगे. और आईवीएफ में वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ मैच्योरिंग और मेकिंग द एंडोमेट्रियम अप टू द मार्क व्हाट वी वांटेड. हमारी राइट, टारगेटेड हमारी थिकनेस है 7 मिलीमीटर. हम हुँ, आईयूआई जब कर रहे हैं तो उसके मल्टीपल एग्स बने, बट उससे हमने देखा उसकी एंडोमेट्रियम ओनली 3 mm. So she is not going to have the success either with IUI or IVF if the endometrium is not up to the mark. So whenever राइट, we convert IUI into IVF, in IVF we can freeze all the embryos and we can go for embryo transfer in the next cycle. And we have the many drugs with us which can increase the size of the endometrium also, which is राइट, not very much possible in cases of IUI. This is, आयु yeah. एंड डॉक्टर लतिका, एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली इज डबल आईयूआई? Double IUI we do when we are not getting the success. First indication, we have already done IUI 2-3 cycles and she is not getting the success. Now sometimes the patient says कि नहीं मेरे को double IUI कर दीजिए. एक तो ये indication हो गया जो patient demands. When we do donor semen IUI, we see many of the patients, their husband is not having the required number of sperms. Only 4 or 5 sperms हैं या बिल्कुल भी नहीं एजोस्पर्मिया है. Then we do donor sperm if the patient is willing. We have the authorized sperm bank, semen bank. We have many kind of semen. The very good quality of semen. All things are written over the sample, blood group, height of the patient, color of the skin, color of the hair, color of the eyes. So we take out the sample, whichever one is matches with the husband body, and we take out the sample and put the sample inside the uterus. We do the IUI. This is called donor with do, uh, IUI with donor sample. In दोनों, these cases, we have to do double IUI to get the more success. Double IUI यहाँ पे करते हैं. दूसरा indication. Third indication, when the count of the semen, count of the sperm in the semen is very, very low. In that cases, normal intercourse is not going to give her the pregnancy. So in these kind of cases also, we can do double IUI. When the count is there, sperm is there, but very less number. So we can राइट, do the pooling of the semen or we can do double or triple IUI in these kind of. okay, right, Yeah. understood. So we can say that there's always option to have pregnancy with IUI, because बहुत लोगों को misconception है कि IUI से तो कुछ नहीं होने वाला. ऐसा नहीं है, आईयूआई से होने वाला है, प्रेगनेंसी ज़रूर होगा. एंड हमने बहुत केसेस ऐसे देखे भी हैं. एंड एक सिंपल लॉजिक, जब अगर आपका एक सिंपल प्रोसीजर से यू कैन अचीव द प्रेगनेंसी, सो why to move ahead with IVF which is a bit complicated. ऐसा नहीं है कि वो मुश्किल है, but again the drugs used are more in IVF as compared to IUI. So I think we cleared all the doubts related to IUI. I want Or to tell you one thing. There hmm, are some absolute indications for IVF, whether you should not try for IUI. IUI. Straightforward, you could go for IVF because even you have the less duration of infertility, even your age is less than 35. मैंने बोला ना पहले कि more than हाँ, 35 हो या duration infertility, but some indications of there, which for in those conditions we should straightforward go for IVF. Even your, despite having your young age or duration of fertility is low, when the both tube are blocked, you are not going to have the pregnancy with either IUI or normal. right, In any kind of things which are not going to help you. When the both tubes are blocked, it is confirmed. You have confirmed with laparoscopy. जैसे अभी right. हम लोग हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी करते हैं ट्यूबल पेटेंसी देखने के लिए, Hmm. बट वेन एवर द ट्यूब्स आर ब्लॉक,
we go for laparoscopy because HSG histosalpingography is not a confirmatory test. If the Right. HSG says that your tubes are one tube is blocked or both tubes are blocked, we confirm this finding with laparoscopy. Laparoscopy is a confirmed investigation which can confirm the tubes are blocked or not blocked. If the bilateral tubal blockage has been confirmed with the help of laparoscopy, you have to go straight forward for IVF. You cannot try IUI or other things. If the patient is having severe endometriosis, grade 3 or grade 4 endometriosis, and she should not wait for IUI or normal things, she should straightforward go for IVF. Male factor infertility, if she has very less count of sperms, but she wants pregnancy with her husband's semen only, and the Hmm. count is very less than 5 million, then she has to go for IVF. IVF की ब्यूटी ही ये है कि अगर हस्बैंड का काउंट बहुत कम है एंड द पेशेंट कपल वांट्स प्रेगनेंसी विद देयर ओन सीमेन, तो उसमें 1 or 2 स्पर्म इज इनफ टू हैव द प्रेगनेंसी. इक्सी में Right. मैंने बताया, इक्सी में डायरेक्ट एक एग को एक स्पर्म से फर्टिलाइज कराते हैं. Right. If we have 2 or 3 sperms only, we can fertilize 2 eggs and we give the pregnancy with the husband's own semen. This is the things we have to go straight forward for IVF if the male count is very कम, very less. अगर उसका diminished ovarian reserve है, पेशेंट का ovarian reserve बहुत कम है, अगर एंट्रल फॉलिकुलर काउंट बहुत कम है, उसकी एमएच की रिपोर्ट बहुत कम आ रही है और पेशेंट बोलती है कि मुझे अपने ही एग से प्रेगनेंसी चाहिए, शी वांट्स प्रेगनेंसी विद हर ओन एग्स, then she should not waste her eggs on IUI or any other things. She should used she should use these eggs in the procedure of IVF only. Otherwise, these eggs will exhaust and she'll not be able to have the pregnancy with her own eggs. This kind of things, this kind of patients, they should go straight forward for IVF. Unexplained infertility में जहाँ पे कि कोई explanation नहीं मिल रहा, आपको 10 साल हो गए शादी को, आपने IUI भी ट्राई कर लिया, लेप्रोस्कोपी भी कर ली, everything is normal, then now you should not waste your time and uh, एंड अगर आपका एज भी बहुत ज़्यादा हो गया है, रिजर्व भी कम है और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, देन यू शुड स्ट्रेट फॉरवर्ड गो फॉर आईवीएफ. और और आपका जैसे कभी कभी लोग वेट नहीं करना मांगते कि हमें वेट नहीं करना, हमारी फैमिली हिस्ट्री है, हमारी Right. सिस्टर को भी ये प्रॉब्लम हुआ था, सिस्टर को फिर प्रेगनेंसी नहीं हुई, उनके भी ओवेरियन रिजर्व कम है, हमारा भी कम है, आप आईवीएफ कर दो. दीज काइंड ऑफ पेशेंट वी शुड गो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर आईवीएफ. Right. So these are, we can say that indications and contraindications for selection between IUI and IVF. But again, we would suggest that please be informative, trust your doctor before selection of any such procedures. And thank you, Dr. Latika. Thank you so much for joining today and explaining the things in, we can say that, easiest form. एक लेमैन की भाषा में आपने सारी चीजें समझाई एंड हमारे व्यूअर्स को सब चीजें समझ आई. एंड व्यूअर्स, इफ यू आर इन और अराउंड बरेली एंड यू वांट टू हैव कंसल्टेशन विद डॉक्टर लतिका, सो प्लीज लेट अस नो. आप डॉक्टर लतिका को डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं उनके सेंटर पे, और अगर आप हमारे थ्रू जाना चाहते हैं देन ऑल्सो यू जस्ट सेंड अस अ सिंपल मैसेज. एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशंस. होपफुली हमने आपकी सब क्वेरीज को सॉल्व किया होगा. थैंक यू डॉक्टर लतिका एंड थैंक यू यूएनएस फॉर अरेंजिंग दिस सेशन. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच पूर्णिमा and UNS for giving me this opportunity. Thank you so much. थैंक यू.